Welcome aspirants, welcome to SRIRAM IAS YT channel. In this lecture, I am going to discuss the type of volcanoes in this Geography Explained series where we discuss and debate important geography related topics under 20 minutes for UPSC Civil Service Examination. Today is the turn of volcanoes. So we will start our class with obviously the one-to-one mentorship that we are offering at SRIRAM IAS. It is free of cost. You don't have to do anything. Just look at the description of the video, fill the form and see how magic happens, because these days proper guidance is equally, if not more important than how much hard work you are putting into this preparation. So absolutely critical. Just take the benefit which in a way are available. So we are discussing the type of volcanoes, but before obviously we will talk about कि volcanoes होते क्या हैं. So geologists, geographers, scientists, photographers, they have described volcanoes in multiple ways. Sometimes they are being described as fissures on the earth crust or vent or opening through which pyroclastic materials like lava or molten rocks, gases, ashes, they come out of the earth crust and into the atmosphere and on the surface. तो जो मोल्टन रॉक हैं जो कि मैग्मा चेंबर में अवेलेबल होते हैं just below the crust, it is the mantle. We have explained this to you in a way that there are three layers primarily. The first is the crust, then the mantle and then the core. तो जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है मैंटल का, जहां थोड़ा मोल्टन लावा या मोल्टन रॉक्स अवेलेबल होते हैं, वहां से ये जो चैम्बर है वो क्रिएट होता है और ये बाहर यहां से निकलते हैं. They have played a very, very important role in the formation and evolution of the atmosphere. In a way, they provide the basic material for rock formation. The igneous rocks, the primary rocks are formed out of what? When the lava solidify. Here, a very crucial distinction has to be made between lava and magma. So magma is molten rock, lava is molten rock. The same thing. When it is inside this pipe or inside the earth crust, we call it magma. When it come out, we call it lava. So depending on the viscosity, how sticky the lava is and the shape and the structure formed out of this particular thing, we have described the variety of volcanoes that are existing on our mother earth's face. In a way, the crust is nothing but a face. So in a way, these things are very, very crucial for UPSC Civil Services Examination. So through examples I will explain, through pictures I will explain it to you, the type of volcanoes which are found in the nature. So the first type is the shield volcano. The shield volcano, a very picturesque, a very famous type. Here, as you can see, the slope is very natural. The gradient is around 10 degrees and the slope is very natural, very gentle. There is no steep sloping here. Why? Because the lava which will come out of this particular volcano will not be that sticky. In a way, if you compare relatively, it will be, जो विस्कोसिटी होगी उस लावा की हाई होगी, तो जो स्टिकीनेस है वो थोड़ा ज्यादा होगी, एंड दैट इज व्हाई जो स्लोप है वो यहाँ पे जेंटल है. नाउ देयर आर टाइप्स व्हिच वी विल सी लेटर ऑन जहां पे विस्कोसिटी और भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें, वेरी फेमस टाइप जैसे कंपोजिट वॉल्केनोज हैं, तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है. इसीलिए यहाँ पे जो आप इस स्लोप देख रहे हो ये काफी नेचुरल है और बिल्कुल भी स्टीप नहीं है. So Mauna Loa, which is there in Hawaii, the Pacific Island Territory of United States of America, वहां पे ये एक ब्यूटीफुल वॉल्केनो लोकेटेड है. ये है शील्ड वॉल्केनो. यहाँ पे जब इरप्शंस होते हैं वो भी जेंटल होते हैं, एक्सप्लोजिव नहीं होते, और मोस्टली बसॉल्ट यहाँ पे होता है. बसॉल्टिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये लेयर्ड नहीं होता बिल्कुल भी. दूसरा हमारा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटो वॉल्केनो, या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है कंपोजिट वॉल्केनोस. So composite or stratovolcanoes are very mountain-like volcanoes. This image has been taken from the space, so that is why it is looking like this. You will notice कि यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो काफी स्टीप है, क्योंकि ये माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर इसलिए इसे कहा जाता है, और ये लेयर्ड होता है. इसमें रॉक्स भी होती हैं, इसमें हमारा लावा भी होता है, और यहाँ जो विस्कोसिटी होती है ऑब्वियसली कंपेयर टू शील्ड वॉल्केनो विल बी
लेस स्टिकी यहाँ पे जो मोल्टन रॉक्स होती हैं उनका नेचर होता है, इसीलिए इस टाइप का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है. दिस इज माउंट फुजी, ए वेरी फेमस volcano which is found in obviously in Japan. यहाँ पे जब इरप्शन होता है तो कई बार एक्सप्लोजिव भी होता है. So this is also a very beautiful type and a very important type. Stratovolcano also called as composite volcanoes. Now primarily if you see the volcanoes are described in these two ways only, but there are obviously other features through which the description जो list है वो थोड़ा लंबी हो जाती है. जैसे Mount St. Helens lava dome. So lava dome here is a very important feature. As you can see here, this is the lava dome. This is the dome which is present. How this has been found? Because of the viscosity. When the viscosity is high and the lava don't find an outlet to move, it will solidify here only. और यहाँ पे एक डोम जैसा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लावा डोम. माउंट सेंट हेलेंस, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है. ये बहुत ही फेमस ये एक लावा डोम है. तो डोम जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां लावा कॉन्सेंट्रेट हो गया है और सॉलिडिफाई हो गया है, लावा डोम. देन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेरी एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज जिन्हें हम कहते हैं कैल्डेरास. सो कैल्डेरा इज ऑल्सो ए वेरी फेमस टाइप. कैल्डेरास, they are very famous type. They are so massive, they run sometimes miles. So this is the entire area is caldera. When the weight of the volcano इतना तेज वहां मैसिव इरप्शन हो रहा है कि ऊपर का जो कोन है वो कोलैप्स हो रहा है, तो बाउल लाइक शेप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे जैसा हमें दिखाई दे रहा है. इतना मैसिव इरप्शन यहाँ पे होता है, गैसेस और लावा बाहर आते हैं कि कोलैप्स हो जाता है वोल्केनोज ऑन इटसेल्फ, एंड दैट इज हाउ माइल्स ऑफ सच कैल्डेरास और द एरिया द फीचर इज बीइंग फाउंड. तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है माउंट टम्बोरा वोल्केनो जो कि लोकेटेड है सुम्बावा आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर. सो वेरी वेरी फेमस टाइप. कैल्डेरास आर नोन फॉर massive explosions. They bring a lot of destruction also when they are located near the population centers, or mostly जो volcanoes होते हैं they are located near the tectonic activity. So plate tectonic activity जहां होती है, जैसे ring of fire है पैसिफिक ओशन के पास, वहां पे मोस्टली volcanoes होते हैं. और अगर आसपास population centers हैं so they bring a lot of damage, death and destruction also. Massive vent opening create होती है और आपस ऊपर ही वो collapse हो जाता है. Now the next type is the most famous and the most frequent type of volcanoes जिन्हें हम कहते हैं Cinder cone volcanoes. So they are the ones who are found most of the times in geography and they are called Cinder cone. जैसे सैन फ्रांसिस्को में volcanic field है, यहाँ multiple volcanoes you can see like this and here and here and here also. So these type of cone like structure या conical structure is been found. Why? Because यहाँ पे जब eruption हुआ, mostly ये once a lifetime वाला eruption होता है, तो जब ये eruption हुआ तो बहुत ही स्पीड से जो लावा था, जो molten rocks थे, जो ashes थे, वो बाहर आए. They were obviously very hot and then they dropped down on this area and solidified. तो इसी वजह से ये कॉनिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंड वॉल्केनोज इन अर्थ्स क्रस्ट जो कि हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं किंडर कोन वॉल्केनोज. तो मोस्टली अगर हम देखें बाय एंड लार्ज कैटेगराइजेशन में देयर आर टू टाइप्स, शील्ड वॉल्केनोज एंड स्ट्रेटोवॉल्केनोज या कंपोजिट वॉल्केनोज. लेकिन उसके बाद the list has been made longer by bringing the kinder cone type. This is also a very important type. Then the calderas, which is very explosive type, and then we also saw the dome-like structure which is present in many of the volcanoes because of peculiar situation existing there. So types हैं हमारे पास, उनके examples and why they have been formed the way they have been formed, उनकी जो basic process है उसे समझना बहुत जरूरी है. And particularly the location of these examples, most famous volcanoes जो होते हैं उनके बारे में हमेशा जब कभी भी वो न्यूज में भी होते हैं, we should try to understand कि where they are located and what type they are, and that is how we decipher the volcanoes which are present on earth crust. So that's all today's class.
You can also join me on my Telegram channel. Stay tuned for further lectures on this Geography Explained series.